Hello everyone, you're watching A Billion Ideas with me, Maria Shakil. The holy town of Joshimath is in danger, ladies and gentlemen, where over the last few days, locals are paying the price for the ecological imbalance that unmitigated construction has caused in the area. Multiple buildings are cracking and experiencing water seepage as the town now seems to be sinking. This entire area, which sees a regular stream of lakhs of tourists all around the world, all year round, is both landslide and earthquake prone and is seeing buildings on the brink of collapse. Dozens of families living in damaged homes have been evacuated to relief centers. The government has assured the locals compensation and rehabilitation as demolition operations are underway to raise the dangerous structures. However, satellite images show that Joshimath and the surrounding areas have been sinking since April last year. While the area sank 9 centimeters in 7 months between April and November last year, it sank 5.4 centimeters in just 12 days between December and January. But this just indicates a long-standing practice in the hilly areas of our country, where rampant development overlooks the environmental red flags in such delicate areas. The question remains, who is to blame for the evident collapse of this town? When will sustainable development become the norm in such areas? And most importantly, can Joshimath be saved now? Before I pose those questions to the panel, over the past 1 week, our reporters have been tracking all angles of this urban crisis, highlighting the dire situation in Joshimath. Here's the ground report first. This is also the visual that we are showing you from outside one of the hotel at the start of the Joshimath town. Clearly you can see that these are huge cracks which are now seen on CNN News 18. This is the line of the crack. This is something which is very serious and needs kind attention of the central and the state government at the same time. This is the reason why we have seen that a couple of high-level meetings have already been done by all the officials. So the residents of this particular location, they are already scared. This is the reason why the relocation of the work is underway. Here at this particular place, you can see that the vehicle is being used. There are multiple vehicles which are being used to transfer the goods. So all these people, they are set to be shifted to the nearby safer location. And because of the fear of caving in, because of the fear of the sinking in of this particular town, the people are now out on the roads. They are out on the terraces until the restoration work is being done. This is something which is a cause of concern for the state and the central government at the same time. जोशीमठ के सिंगधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जमीन के खिसकने का, दरारों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाते, देखिए यहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले तस्वीर दिखाई थी कि एक मंदिर जो था वो उनमें पहले दरारें थी और वो फिर पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन आज तस्वीरें देखिए कि मंदिर की जो दीवारें थी वो तो पूरी चकनाचूर हो ही चुकी है। जिस छत पर ये पूरा मंदिर था उसकी वो दीवार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पीछे की जो दीवार थी वो पूरी टूट के यहाँ पर नजर आ रही है, टूटी हुई नजर आ रही है। ये मंदिर जो है ये पहले यहाँ छत पे बना हुआ था, इस पूरे गैप पे बना हुआ था, इस पे दरारें आई और उसके बाद ये मंदिर पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि पूरी दीवारें टूट गई, लेकिन जमीन जो है वो खिसकती रही। यहाँ मोटी मोटी दरारें जिनको पत्थरों से भरने की कोशिश की गई वो दिख रहा है। एक शख्स आपको ऊपर नजर आएंगे, देखिए बिजली के खंभे पे हैं क्योंकि डिमोलिशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले बिजली के कनेक्शंस को काटा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि जब ये बिल्डिंगें टूटेंगी तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि इस पर लटके भी। इसी वजह से ये जो काम है पहले सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी इसे किया जा रहा है। अब यहाँ से देखिए ये एक पूरा रास्ता, एक गली जिससे लोगों का आने जाने का ये रास्ता जिससे लोग जाते थे, पीछे घर हैं बहुत सारे और वो नीचे से तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाते जाएंगे तो देखेंगे गैप कम होता जा रहा है और उसके बाद ये बिल्डिंगें दोनों चिपक गई हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर कि जमीन किस तरीके से धंस रही है, खिसक रही है। और ठीक होटल के आगे जो गैप्स बने हुए हैं, अब इन गैप्स को अगर आप देखें तो इस गैप्स गहरे गैप्स हैं जो हल्की दरार से रोड की तरफ से शुरू होते हैं, पर सीढ़ी फाड़ते हुए पूरे सड़क से इस होटल के हिस्से को ये अलग कर देते हैं। ये पूरा का पूरा ये बिम है
और सपोर्ट के लिए लगाई जाती है, जो कि खुद इस वक्त देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे में कब जमींदोज हो जाएगा कुछ पता नहीं। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए इस तरह के टुकड़े जो कि दीवारों से झर के नीचे गिरने शुरू हुए हैं। लेकिन इधर के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। ये पूरी की पूरी विम क्रैक पड़ी है, कुछ कपड़े हैं, डब्बा है जो कि यहाँ पर इस घर में इस्तेमाल किया गया होगा, और ये वाला इलाका पूरी तरीके से जर्जर, मतलब हल्का सा भी कंपन हुआ तो ये इलाका जमींदोज हो जाएगा। Emotions are high here in Joshimath for all those affected families who have been asked to shift to the nearby safer location. We are now in conversation with one of the affected lady, Rekha. She has come here to pay a last visit to her old residence. Rekha जी, आज आप यहाँ पे आई हैं, आंखें आपकी नम भी हैं, क्या भावनाएं लेकर के आप यहाँ पे आज पहुंची हैं? आज मेरे मन में हुआ कि आज अपने घर को जो हमने पहले सही सलामत देखा था उसे देखने चले जाएं, देख लें अपने भाइयों का कैसा उनको लग रहा यहाँ पे देख के। तो So this is the high on emotion sequence that we are showing you here on CNN News 18. Rekha ji, she has spent most of her life at this particular place, which is now turned into the Anganwadi center. But a lot of her younger life, she has been all through her life at this place only. But now it has been marked as unsafe. The process of demolition for 2 hotels which were declared unsafe by a team of CBRI has started here in Joshimath. Now these are the visuals you are seeing on TV, that how a team of all the agencies including NDRF, SDRF, in fact the Joshimath police as well is deployed at the spot. They are currently carrying out the process of dismantling. Because this is one such fragile location, this is the reason why every step has to be taken very carefully. So as of now, the transformers have been removed. Now the removal of the poles, electrical poles, is underway. In fact, you can see these are the vehicles which have been deployed here to carry out the entire process of demolition. And a huge gathering can be seen on this particular road. Also, the barricading in temporary sense has been put up at this particular place from the entry side and on the other side as well by the local police. So there is a huge team which is deployed here. In fact, we have been given to understand that a team of the fire services, they are also present right here at the spot. It is freezing cold here in Joshimath and the temperature currently is at -3 degrees Celsius. And we are currently reporting from outside one of the center, which is the Nagar Palika center, which is made as one of the relief center for those who are affected out of the crackage. But this is one such room. Outside the room, you can see there are a couple of people who have been standing here because there is no room inside this particular place. You can see that this is just one room and a couple of people have been put in this area only. This is the reason why in freezing cold they are angry, they are scared at the same time, and also there are some other people as well who want to shift to other places. Now you can see that it is freezing cold on one side. On other side, these are the women of the Joshimath who are forced to sit here. Also there is the warning as well from the Met Department for the rains and the snow as well in Joshimath. Let's try to take a view. मुझे पता है आप नाराज हैं, आप सरकार से नाराज हैं, आपकी बात भी ठीक है. क्या भावना निकलती है ऐसे वक्त में? एक रूम में सब लोग आ रखे हैं. ये तो आप देख रहे भेड़ बकरी की तरह इकट्ठे हैं सारे, तो इससे आपको क्या मैसेज जाता है? मतलब ये खुद देख लो आप. तो कैसे इन सब से आप डील करें? क्योंकि एक तरफ तो आप अपने घर पे आप नहीं हैं क्योंकि बड़ी खराब दशा हो चुकी है घर की, दूसरी तरफ आप यहाँ पे हैं. धामी जी आए थे, आपको लगा कुछ फर्क पड़ा? कुछ हुआ? देखा ही नहीं, हमें दिखे ही नहीं, सुना हमने सिर्फ. जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ कोई नहीं पहुंचा, ना हमारी कोई सुनाई हुई. हमें बहुत गंदा लग रहा है कि धामी जी यहाँ पे आके मिले नहीं, जहाँ पे जो घटना हुई है उसे देखे नहीं गए. तो क्या सरकार से क्या वो कर सकते हैं? हम देखना चाहिए रे कहाँ पे क्या हो रखा, क्या पे नहीं हो रखा. हमारी पीड़ा समझे, पीड़ा भी तो सरकार को समझना चाहिए कि कहाँ पे कौन इंसान क्या हो रहा बोल के. There is one heater which is placed here. It is already -3, -4 degrees Celsius in Joshimath town. But on the other side, these are the people, these are the women of Joshimath who are forced to live in a single room only. And already this place is full. There is only a single bed.
2021, remember there was a flash flood disaster in Chamoli where Joshimath is located, and it killed around 100 people. And over 6,000 people were killed in the 2013 Kedarnath floods. Now this crisis in Joshimath. All these incidents raise several critical questions, but I want to understand one from all the panelists who are joining me. Can we strike a balance between development and devotion? Atul Sati is an activist and petitioner joining me from Joshimath. Professor C.S. Dubey is geoscientist. Indresh Maikuri is a social activist and member of Save Joshimath campaign. Sudhir Krishna is former Secretary of Urban Development, Government of India. Sudhir Krishna, mountains of Uttarakhand are ecologically very fragile. And on top of that, there has been deforestation, a rapid urbanization, and an ever-increasing construction work, which has made the situation even worse. Would you then say that the entire state is vulnerable? Is this, sounding alarmist or presenting the right picture? I think you are not sounding alarmist. You are presenting the right picture. And we have to learn from what has happened in Joshimath and Karnaprayag now. And it is high time that we revise the development strategy for Uttarakhand. The problem of sinking of land is there in many cities in the world and also in India elsewhere. But Uttarakhand is somewhat different because Uttarakhand is in the Himalayan area and Himalayan areas are prone to seismic activity also. Now I can hear you. In a different position. I mean, it is all like in Joshimath has all got. To God, he has not given me opportunity. Yes, please go ahead. And therefore, in the loose soil area, in the Himalayan area, which is crisscrossed with water bodies, subsoil water aquifers, and then the undulation of land, all that, it makes this area very, very fragile. It is not comparable with the rest of the India. And therefore, bringing up big projects, whether it is road project or whether it is power project, hydroelectric projects, all that has to be seen in a different framework now. I mean, what happened in the past is a history, is a lesson for us to learn. And we must take immediate corrective measures now by preparing a plan for the state, a proper land use plan for the state as a whole, and then make regional plans based on watersheds and then make sub-regional plans, local plans based on micro. And there are some people who have been repeatedly raising it. In fact, raising it for the last several years now, and they are also joining us on the show. अतुल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी. बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं. 1976 MC मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, देन 2006 में फिर वाडिया इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, 2022 की भी रिपोर्ट है. इतनी सारी वार्निंग रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो सिचुएशन है जोशीमठ में वो लैंडस्लाइड प्रोन है, उसके अलावा जो सीवेज सिस्टम है उसमें दिक्कत है, बहुत सारे इश्यूज हैं. तो क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो 1976 में शुरू हुई थी या उससे पहले जो चल रही थी, क्या वो रुकी थी बीच में कोर्स करेक्शन के लिए, या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए थे जैसे एनटीपीसी का हाइडल प्रोजेक्ट है या उसमें, या फिर कुछ चेंजेस नहीं हुए और जो प्लान पहले था वही कंटिन्यू हुआ था? नहीं, 76 में तो कंस्ट्रक्शन इतना नहीं था. 76 में तो एक घटना 74-75 में हुई. यहाँ जो है लैंडस्लाइड के कुछ उदाहरण मिले. एक जो है पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस था वो धंस गया और कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई. उसी का संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने जो है उस समय के गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की. उस कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें की और उसने ही ये कहा कि जोशीमठ जो है भूस्खलन के मलबे पर है, मोरेन पर बसा हुआ है और यहाँ जो है बहुत बड़े निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए. यहाँ जो बोल्डर्स हैं उनको हिलाया नहीं जाना चाहिए. यहाँ ढलान पर जो पेड़ लगे हुए हैं इन पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो है और ज़्यादा वृक्षारोपण की यहाँ ज़रूरत है. सुएज सिस्टम बनाना चाहिए, यहाँ के पानी की निकासी की प्रणाली ठीक होनी चाहिए. लेकिन उसके खिलाफ जो है लगातार ये जो बड़े निर्माण कार्य लगातार उनको मंजूरी मिलती चली गई. यहाँ विष्णु प्रयाग परियोजना आ गई जो जयप्रकाश कंपनी ने बनाई. ठीक जोशीमठ के सामने हाथी पहाड़ पर जो है एक 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई और
440 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा। उस समय ही जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, उसी के दरमियान सुरंग पर जो है बहुत बड़े विस्फोट किए गए सुरंग निर्माण में, जिससे पूरा जोशीमठ हिलता था, थर्राता था। उसके बाद जो है राज्य बनने के बाद बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं को यहाँ मंजूरी मिल गई, जिसमें से ये एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना भी है। जब इस परियोजना का सर्वे ही शुरू हुआ, तभी हम लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। आप देखेंगे कि 23 दिसंबर 2003 को, जबकि इस परियोजना की अभी जो है सर्वे की ही शुरुआत हो रही थी, हमने इस पर सवाल उठाया और तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र भेजा। लेकिन जो है उस पत्र का जो है आज तक हमको उत्तर नहीं मिला। 11 सवाल हमने किए थे, राष्ट्रपति जी के यहाँ से पत्र आया कि हमने जो है संबंधित विभाग को इसका एक सेकंड मैं इसको कंप्लीट कर लूं प्लीज। जो है राष्ट्रपति साहब के यहाँ से पत्र आया कि एनटीपीसी इनके सवालों का जवाब दे। आज तक उनके जवाब नहीं मिले। 2005 में जब 13 अगस्त को इनकी जन सुनवाई हुई, उस जन सुनवाई में हमने सवाल किए। हमने कहा आपने पुराने प्रश्नों का हमारा उत्तर नहीं दिया, चलिए आप ये बताइए कि आपके पास जो है फ्लो ऑफ द वाटर का कोई रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि नहीं है। हमने कहा कि आप 50 साल 100 साल के पानी का आपके पास आंकड़ा है। इन्होंने कहा कि नहीं है। तब हमने कहा कि आप ये फिर ताश का महल क्यों बनाना चाहते हैं, जब आपके पास पानी का फ्लो का आंकड़ा नहीं है, आपके पास बारिश का आंकड़ा नहीं है, तो आप कैसे तय कर रहे हैं कि आप 520 मेगावाट बिजली यहाँ बना लेंगे। फिर हमने कहा कि भाई 76 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उसके खिलाफ जाकर के आप क्यों कर रहे हैं। वो तो छोड़िए, इन्होंने जीएसआई की बात नहीं मानी। जीएसआई ने इनको बिल्कुल मना किया था कि आप इस टेरेन पे नहीं बनाइए, अगर आप यहाँ सुरंग बनाएंगे तो फॉल्ट लाइन के ऊपर ये सुरंग बनाएंगे और इसके रास्ते में जो है आपको हॉट वाटर स्प्रिंग पड़ जाएंगे। ये सब इनको कहा गया, लेकिन इन्होंने उनकी सिफारिश नहीं मानी। जिद में इन्होंने बनाया है। इसके बाद हमने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी प्रोफेसर दुबे, the point with which Atul Sati began, I want to highlight a little more on that, because we are looking at the larger crisis here about maintaining that balance which is needed between ecology and development. The material on which Joshimath is located is unconsolidated loose material. And several scientists say that this is old landslide material. There are other scientists who are of the opinion that this is glacial debris. These are unstable, and that's why the foundation of this city is unstable. Other reasons which have been given are poor drainage system, there is poor sewage patterns, and also the river flowing through Joshimath is cutting its bank. So there are concerns at multiple levels. And then still the construction which continued, construction activities was stopped only when the entire town started sinking. Yeah, you know, first of all, I don't want to question the Vishnu Prayag project because it was a very earlier project, and you know, and it's far away from this place, 12 kilometers. But the Vishnu Ghat project, I don't know much about that. But yes, the geology of that area is very fragile, especially when we see the loose sand and debris. It is a paleo landslide. Everybody knows now what is paleo landslide. It is an old landslide which was formed. And most importantly, Joshimath is just on the top of the Vakrita thrust, a tectonic line which goes up to 2,400 kilometers wide from east to west in Himalayas. And anything there, if it becomes active and it can become active at any place. Because below that there is another thrust called as Munsiari thrust. And Munsiari thrust is very, very active thrust. So if you have a very active tectonics at the lower level, and it's on a landslide, there is a landslide, paleo landslide, if you have more stress on that land, for example, the buildings you have made, the high-rise buildings you have made, the water sewage system is wrong, there is no plants, trees have been cut for the the new buildings, you know, and the land, the roads have been constructed, the tunnels have been conducted without looking into the local geology of the area, the local movements in the area, because, you know, when we do seismic studies, I think in Himalaya, everywhere in the Himalaya, a project is going on microseismic zonation, where we have a lot of seismic stations are there, and we are looking at the velocity of movement of the tectonic plate. So as we are very close to the main central thrust and this Munsiari thrust and the Vakrita thrust, these things must have been going on, and based on that only GSI and others must have told. But as we have seen that, yes, in our projects we have seen below the Alaknanda, we have a paper there. It's a very fragile zone, and the rate of erosion is very high over there.
Yes, there are due to several this recommendations construction. which And have been man-made material made. when it comes up. Yes, there have been several geologists who have also, visited these now areas. Yes, cutting, but sir, cutting I'm back just to trying to understand Madam, from you. One moment. Indresh Maikuri is Yeah. also joining us. Let me speak to him as well. He is from the Save Joshimath campaign. Indresh ji, जब अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें क्लैरिटी है कि देयर विल बी रीलोकेशन, रिहैबिलिटेशन, वही शुरू हुआ है, कॉम्पनसेशन की भी बात सरकार कर रही है. मेरा सवाल अभी आपसे ये है कि अब क्या होगा? ये जोशीमठ की बात नहीं है, उसके अलावा आसपास के भी बहुत सारे टाउन्स हैं. और देखिए उसके अलावा आसपास के बहुत सारे टाउन्स हैं और जो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, असल में जो ये डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट मॉडल है, डिवास्टेटिंग डेवलपमेंट मॉडल है, तो इसको जब तक रिविजिट नहीं करेंगे, इसको जब तक दोबारा से नहीं देखेंगे, तो और जब तक इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो तब तक तो बात बनेगी नहीं. और हम तो लगातार ये बात कह रहे हैं नहीं, कि आप इसको डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट मॉडल कैसे बोल रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव इसलिए है कि ये पूरा जो डिवास्टेशन है तो वो उस डेवलपमेंट के मॉडल के साथ ही आया है ना. अतुल सती जी ने भी बताया उस परियोजना को लेकर के कि क्या उनका पूरा संघर्ष, पूरी लड़ाई उसको लेकर के रही, और वो लगातार हमारे लिए डिस्ट्रक्शन लेकर के आ रहा है, हमारे लिए डिवास्टेशन लेकर के आ रहा है, हमारे लिए आपदा का सबब बन रहा है. So that is why I am calling it a devastating development model. That's why I am calling since it is Atul Asati and you on the ground, I want to understand from you, Indresh ji, first. What will ensure balance between development and ecology? Because development has also to keep pace with the changes which are happening all over the country. Several hill states are developing at a very fast pace. You have to have, proper electricity. You need good roads. These are basic infrastructure. Why should people living in hills suffer? We need electricity, but the question is, where is electricity? This power project, which whole of the government is trying to save, which the government is shielding, its agencies are trying to shield, this project was supposed to come up in 2011, and it is yet far away from commissioning. This project has caused havoc for the people of this region. So that's why we are saying that we need a balanced approach. We need to have a balance between ecology, environment, and development. Why can't we construct roads which do not hamper the environment? Why can't we make hydropower projects which do not hamper the environment? This is the basic question. Why can't we derive a development model which does not Atul Sati, encroaches what the is this development which does not model attacks the environment, which does not attack the ecology? So what is this development model then? Atul Sati? ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये है बड़ी पूंजी, बड़ा मुनाफा, बड़ा लालच. नहीं, मेरा सवाल है उसकी कीमत कि बैलेंस अगर करना है इकोलॉजी और डेवलपमेंट में, तो इस तरह ये कौन सा मॉडल बन सकता है? इसका सजेशन दीजिए. किस तरह का मॉडल होगा ये? हम कह रहे हैं कि वो मॉडल होगा जन केंद्रित विकास का, यानी कि पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, जिसके केंद्र में जनता हो, जिसके केंद्र में लोग हो, जिनको विकास की जरूरत है. जिसके केंद्र में केवल पैसा है, लालच है, वो विकास जो है आपको विनाश के ही कगार पर ले जाएगा, जैसे कि आज ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर डूबने को है. और ये मैं बार बार कह रहा हूं, जोशीमठ केवल जोशीमठ वालों के लिए नहीं है. जोशीमठ जो है इस विश्व की धरोहर था. इसका एक क्रोनोलॉजिकल 1500 साल का इतिहास है. इसकी एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है. यहाँ जो है कई संस्कृतियों का मिलन हुआ. तिब्बत का व्यापार होता था जोशीमठ से. और जो है इस विश्व की धरोहर को आप केवल एक विनाशकारी मॉडल के जरिए विकास के आप इसको नष्ट कर रहे हैं, डुबा दे रहे हैं. तो क्या वो विकास की कीमत पूरे एक संस्कृति को नष्ट कर देना ठीक है? It is a town which has been revered by Hindus. It's an important pilgrimage center, and that is what I wanted to understand from all of you, that how can there be a balance between development and devotion. I would like to thank all the panelists. Thank you so much for your time. I'll be coming next week with another idea that is impacting a billion thoughts. See you next week. Thanks so much for watching.